सच। तो दूसरी बात ये है कि देर आर ऑल्सो रिपोर्ट के पानी की कमी की वजह से वहां पे लोग गंदा पानी पी रहे हैं, विच इज ऑल्सो कॉजिंग बीमारियां एंड स्टफ, एंड हॉस्पिटल का सारा फ्यूल खत्म हो गया है, जिसकी वजह से भी अमवात में वो इजाफा होता जा रहा है. सो इट इज ऑल्सो लाइक एडिंग इनटू सो मेनी थिंग्स अदर देन द बॉम्बिंग. So can I add a point here? You raised a very genuine point, Melissa, because I was reading a report, even before the war, the hygiene and clean drinking water, or unclean drinking water is the reason of 20% kids death in Palestine, right? Even before the war, but that was the scenario. Now here we have got a administrative unit in form of Hamas, who has been able to build $1 billion worth of tunnels, but is not able to build, clean drinking water plants for its civilians from the last whatever number of years. But Andolanji, in this argument, the problem is it's a war zone since like 4 or 5 decades. तो बहुत ज़्यादा war zone रही है, और उसमें जब आपकी population move भी करती है, displace भी होती है, government कोई stable नहीं रही, तो I don't think so you can blame them for not having a better infrastructure in terms of health, water, sanitation, whatever. It's been a war zone. अभी 4 साल पहले भी हुआ था, उससे 4 साल पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है. I think it's a bit unfair to say कि ये जो onus है, burden है, वो इनके ऊपर है कि इनके पास facilities नहीं है. So I'll just give you a statistics thing. Very recently, India ran a Har Ghar Jal program, right? Clean drinking water to every household. And a state like UP, which is 260 odd million people, right? The expense for doing this entire program was less than $500 million, right? And we are talking about a population of 2.5 million, if I'm not wrong, or 25 million. What's the number exactly? 2.3 million, right? So, so I can understand that hospitals may not be able to erect it, right? There would be infrastructure issue. But providing clean drinking water, I mean, that's not a huge issue for 2.5 million people. I mean, it's not even a 100K expense or a 500K expense, right? देखें, ये लोकल मसला है वहाँ का. पता नहीं आपने कि ये कहाँ से इंफॉर्मेशन ली है, जस्ट टू टारगेट हमास. वहाँ के लोगों ने हमास को इलेक्ट किया है, उन्होंने को वोट दिए हैं. अगर उनका मसला होता ना ये जैनी जिस तरह आप बना रहे हैं, तो कभी उसको वोट ना देते. जी, मैं इसकी भी रिपोर्ट मैंने भी पढ़ा है, जाके नहीं देखा था. लेकिन खालिद भाई, जहाँ तक इलेक्शंस की बात है और उनके पावर में आने की बात है, यहाँ पे वी हैव टू कीप इन माइंड लास्ट इलेक्शंस व्हिच टुक प्लेस वाज इन 2006. एग्जैक्टली कितने लोग हमास को सपोर्ट करते हैं और कितने नहीं करते, उसकी बहुत वेरियस न्यूज़ेस हैं. बहुत सारे लोग जो हैं वो पैलेस्टीनियन सपोर्ट किस लेवल तक हमास एंजॉय करता है, इसके अंदर भी एक डिस्पैरिटी है. जाहिर है वहाँ पे दूसरी कुव्वतें भी हैं, अल-फतह भी है, PLO, अल-फतह भी मौजूद है, PNO भी है. और एक और बात है, ये जो इस पॉइंट पे मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो इजरायली गवर्नमेंट और जो वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी स्पेशली जो पावर में है, जब वो ये भी बात करती हैं कि हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टाइन और स्पेसिफिकली गाजा स्ट्रिप, तो कुछ अरसा पहले तक तो वो PNO की मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे थे. आफ्टर दिस अटैक, हाउ डिड दे ऑल ऑफ अ सडन रिकग्नाइज? देखें, जब आपने 2006 से लेके अब तक रिकग्नाइज ही नहीं किया कि हमास की कोई गवर्नमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, एंड यू डोंट वांट टू नेगोशिएट विद देम, तो अगर हमास एक एक्शन टेक करता है और क्रिएट करता है, तो उसका रिप्रकशन और उसका ब्रंट जो है आम पैलेस्टीनियन के ऊपर आप कैसे गिरा सकते हैं. और उन अथॉरिटीज़ के साथ जिनके साथ आप सिंक करके जिस तरीके से भी निगोशिएट कर रहे थे और डे टू डे चीज़ों को डेवलप कर रहे थे, या वो बेचारे डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो आपने 2 हफ्ते के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया. पैलेस्टाइन के अंदर जो पिछले 10 साल के अंदर
हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने, बिजली की चीजें बनी, आपके पावर प्लांट्स बने, देर ऑल गॉन इन 2 वीक्स आफ्टर लैंड दिस। लॉक्ड है, वो लैंड लॉक्ड है, गजा का मुहासरा किया होता है, कोई चीज जाने ही नहीं देते उधर, हाँ, कंट्रोल्ड एरिया है। हमास को तो एक एक्सक्यूज बना के देव डिस्ट्रॉयड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ गाजा, and they are not stopping. तो with that मैं हसाम अफरीदी के पास जाना चाहूँगा. I think he understands the question. Who is the actual victim in all this? Is it Hamas? Is it the Israeli state? Is it the Palestinian people? Who is the actual victim here, in your opinion? Thank you, Shaji. Definitely, it is without a shadow of doubt the Palestinian people and the civilians who are being आपकी आवाज नहीं आ रही हसाम. शाजी एक जरा अपने ना क्वेश्चन को करेक्ट कर लें. डोंट सेपरेट फलस्तीनियन एंड हमास. हमास फलस्तीनियों के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए, वो खुद भी फलस्तीनी है, कोई अफगान मुजाहिदीन नहीं वहां पे पहुंचे हुए. लिहाजा ये आपका जो करेक्शन इसको कर लें अपने आंसर को, फलस्तीन और खालिद हमास भाई, दे आर ये टू थिंग्स. मैटर ऑफ ओपिनियन है. इसके अंदर बहुत सारे लोगों के, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब्बास का स्टेटमेंट है, इसके ऊपर हमजा का स्टेटमेंट है, इसके ऊपर वेरियस पैलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट का स्टेटमेंट है. ठीक है, ये सारे लोग ये कहते हैं कि हमास के साथ आम पैलेस्टीनियन जो है उसकी क्या सपोर्ट है, दैट इज क्वेश्चनेबल. और फिर दूसरी एक पार्टीज हैं जो कहती हैं हमास और पैलेस्टाइन सेपरेट नहीं है. और इसके अंदर जो मेन ओप्रेसर है वो इजराइल है. इजराइल जो है ऑल ऑफ अ सडन, जो इतने सालों से ये कहता था कि हम हमास से डील नहीं करेंगे, और हमास को वो निगोशिएशन टेबल पे अपनी अथॉरिटी पे जब मर्जी ले आता है और अपनी मर्जी से उठा के बाहर फेंक देता है, कि कभी वो उस तरह हो जाते हैं. अगेन, अगर वो इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव बता रहा है पैलेस्टाइन का हमास को, तो आई वुड बी वेरी स्केप्टिकल कि एक तरफ इजराइलीज जो नियरली स्ट्रेटेजिकली कारपेट बॉम्ब कर रहे हैं, जो इनकर्शंस कर रहे हैं, जो पैलेस्टीनियन बच्चे और औरतों को मार रहे हैं, खालिद भाई, ठीक है, उनकी बात मैं कैसे मान लूं उन उससे लोगों पहले के भी मार रहे ऊपर थे, ये जो 7 अक्टूबर से पहले भी बच्चों को मार रहे थे ना, फलस्तीनियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन वो तो मार ही लेकिन रहे थे, वो लेकिन वो वो खबर मेरा नहीं आती. क्वेश्चन नहीं है. वो तो 70 साल से मार रहे हैं. तो हाँ जी. जो 70 साल से मार रहे हैं उनकी बात मैं कैसे मान लूं उन लोगों के ऊपर, जिस तरह हमजा जैसे लोग हैं और कई तरह के लोग हैं. अरसलान अरसलान रजा है. देर आर वेरियस एक्टिविस्ट. लिंडा सारसोर है यूएस के अंदर. शी इज वेरी वोकल अबाउट दीज थिंग्स. शी इज फ्रॉम पैलेस्टाइन ओरिजिनली. जब वो लोग अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हैं कि ये सारा कुछ है, तो मुझे एक पैलेस्टीनियन लीडर की, एक पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट की आवाज के अंदर ज्यादा वेट लगेगा कंपेयर टू इजरायली स्टेट के ये पैलेस्टीनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. और इस वजह से आई विल बी वेरी स्केप्टिकल एंड आई वुड लाइक यू टू बी अ बिट स्केप्टिकल कि ठीक है, हम इमोशनल होके चीजें कहते हैं, लेकिन इजरायली स्टेट का ऑपरेशन एक अलहदा बात है. हमास की क्या रिप्रेजेंटेशन है पैलेस्टीनियन के अंदर, वो क्या सपोर्ट इंजॉय करते हैं और कितनी नहीं करते, ये एक सेपरेट इशू है. इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन है. इस्माइल हानिया फलस्तीन का वजीर आज़म मुंतखब हुआ था इलेक्शन जीत के, लेकिन वो अमेरिका को मंजूर नहीं था, वो इसराइल को मंजूर नहीं था, क्योंकि उनको हार्ड लाइनर कहते हैं. इसलिए उनको जो है उनकी हुकूमत खत्म करके अपना पपेट जो है वो महमूद अब्बास बैठाया गया. अच्छा, तो खालिद भाई, यहाँ पे मेरा आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि वेरियस अकाउंट्स हैं पैलेस्टीनियन लीडर्स के, और मैं अब्बास की यहाँ बात नहीं कर रहा, और आम पैलेस्टीनियंस के, जिन्होंने इजराइल के बारे में तो गुफ्तगू की ही है, लेकिन उन्होंने हमास के बारे में भी गुफ्तगू की है कि किस तरीके से हमास हैज आल्सो बीन प्रॉब्लमैटिक फॉर देयर डेली लाइव्स. जी शाजी, वो तो वही यहाँ तकसीम पे है ना एक जो मुस्लिम ममालिक डिस्पैरिटी में है. है, लिबरल, सेकुलर और इस्लामिस्ट की, ये तकसीम वहां पे भी मौजूद है.
लेकिन लिबरल्स वो और इस्लामिस्ट इस्लामिस्ट, आप हम ये मैं तो डिवीजन मौलाना वहां पे भी हजरात मौजूद की है जिस बात तरह पाकिस्तान में मौजूद है।